بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کلاس 12 سبجیکٹ اکنامکس کے لیے وہ ہے نیشنل انکم سے ریلیٹڈ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز لائک جی ڈی پی, جی این پی, این این پی. کل کے لیکچر میں ہم نے تفصیلاً جی ڈی پی کے بارے میں پڑھا، تو آج ہم آگے چل کر ادر ٹیکنیکل ٹرمز لائک جی این پی اینڈ این این پی کے بارے میں پڑھیں گے. As you see in the last lecture that we explained GDP with an example. What example we assigned there? We take an example of 4 persons, that is Mr. A, Mr. B, Mr. C and Mr. X. So who are Mr. A, B, C and X? Mr. A is an Indian who is working in India and is earning in India. اسی طرح مسٹر بی بھی انڈین ہیں تو انڈین میں ہی یہ کام کر رہا ہے، اس کی ارننگ بھی یہی ہوتی ہیں. مسٹر سی جو ہے یہ ایکچولی آسٹریلین ہے، یہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہے، تو مگر کام جو یہ کر رہا ہے، جو ارننگ کر رہا ہے وہ انڈیا میں کر رہا ہے. اسی طرح مسٹر ایکس بھی ایک آدمی ہے، یہ انڈین ہے مگر کام آسٹریلیا میں کر رہا ہے، تو اس کی ارننگز وہیں پر ہوتی ہے. So dear students, if we add up incomes of Mr. A, Mr. B and Mr. X, we get GNP, that is gross national product. The full form of GNP is gross national product. So dear students, what is GNP? It is the sum of earnings earned by Indians during a year. However, it must be noted here in GNP that the earnings earned by the nationals of India during a year, that the earnings may be in the India or outside the India. All these earnings when gets added up, we get GNP. So dear students, in case of our example, if we add up income of A, income B and income of C, person C, so we get income of A is 12,000, income of B is 7,000 and income of this person X, that is 5,000. If we add up these incomes, we will get the figure as 24,000. Yes dear students. Now we can make a formula for GNP, that is like this. GNP is equal to GDP. What is our GDP? GDP is our 12,000 to 7,000 plus 2,000, یعنی کہ جی ڈی پی یہ ہو گیا جی ڈی پی 12,7,2 ہو گیا جی ڈی پی پلس فیکٹر انکم فرام ابراڈ. فیکٹر انکم یعنی کہ فیکٹر انکم فرام ابراڈ، جو انڈین ہیں جو اس نے باہر سے یہ آمدنی کما کے لائی ہیں، اس کو بھی ہم ایڈ یہاں کرتے ہیں جی ڈی پی کے ساتھ، پھر مائنس کرتے ہیں فیکٹر انکم ٹو ابراڈ، یعنی کہ جو آمدنی ہمارے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جاتی ہیں بائی دا پرسن ہو واز ارننگ ان دا انڈیا. سو وی کین سے دیٹ our GNP here in example is 24,000. Dear students, اسی طرح اور ایک ٹرم اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، دیٹ از دس نیشنل انکم سے ریلیٹڈ اور ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں این این پی، یعنی کہ
net national product. Net means total, national means that is the earnings of nationals, product means income. Net national product. What is net national product? Dear students, before we will get any concrete definition for the NNP, that is net national product, इसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, that is depreciation. What do we mean by depreciation? Dear students, while the process of production of any commodity, there is some wear and tear of the fixed assets. That is, जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उस चीज़ को तैयार करने में कुछ चीज़ों की यानी कुछ सामान की यानी कुछ आलात की दरकार पड़ती हैं. जब हम उन आलात को इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्शन ख़त्म करने के बाद उन आलात में कुछ डेप्रिसिएशन होती है. डेप्रिसिएशन मीन्स घिसाई यानी कि वियर एंड टियर. फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. मिसाल के तौर पर हम एक ट्रैक्टर की एग्जांपल लेंगे जिसको हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने ज़मीन में फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. वेदर इट मे बी द लोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या प्लोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या अदर पर्पज़ के लिए फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं. जब हम इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो कभी इस ट्रैक्टर में कुछ खराबी आती है तो उसमें कुछ लागत लगती है, और ट्रैक्टर को इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर मैं इसमें कुछ खराबी भी नहीं आई तो मगर इसमें घिसाई आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ. जब हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो इसके टायर की जो है वो घिसाई होती है. फॉर एग्जांपल मैं टायर की तरफ, घिसाई तो मशीनरी अदर पार्ट्स में भी होती है, मैं आपको टायर की तरफ इशारा देता हूँ. तो इन टायर्स में घिसाई होती है. तो इसी जो ये फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 लाख में ट्रैक्टर लाया था, अगर हम अब इसको 1 साल के बाद भेज देंगे तो इसको 5 लाख नहीं आएंगे बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू घट गई है, क्योंकि इसके पार्ट्स जो है वो घिस गई हैं. तो इस घिसाई की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो घट गई है. तो इसी घिसाई को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में. यस डियर स्टूडेंट्स, मगर हमको यहाँ पर क्या समझना है हमें NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है. नेट नेशनल प्रोडक्ट का हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम दिस GNP में माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो हमारा जो वहाँ पर निकलता है उसको हम NNP कहते हैं, जिसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. होप दैट यू हैव गॉट द कंसेप्ट. सो थैंक यू फॉर टुडे. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.